Hello and welcome back to Witsol. In today's class, we are going to learn some alternative names for common things and nouns. There are a lot of different names for one things and we are often confused when someone calls something with a different name. So let's talk about what are different names for some common things, nouns and places. For example, someone would say chips or someone else would say French fries or crisps. So all these are the same things. लेकिन क्या डिफरेंस है? अब ब्रिटिशर्स चिप्स कहते हैं फ्रेंच फ्राइज को, देन क्रिस्प दे कॉल इट इफ दे आर क्रिस्पी. अमेरिकन फ्रेंच फ्राइज कहते हैं और चिप्स कहते हैं. अब ऑस्ट्रेलियन जो हैं ऑन द अदर हैंड दे वुड कॉल एवरीथिंग चिप्स. तो एवरीथिंग इज राइट बिकॉज वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स एंड वी कैन स्पीक इंग्लिश एज पर आवर ओन कन्वीनियंस. So let's see what are the different names of some things that can be used alternatively. Before starting, let's see why learn alternatives. जरूरत क्या है याद करने की? To avoid repetition. कोई एक चीज को बार बार सेम नेम से बुलाना. To sound more natural. अब बार बार आप एक ही चीज कह रहे हैं. It starts sounding more robotic. उस चीज को ओवरकम करने के लिए. And to understand British and American English differences. कुछ चीजें ब्रिटिश इंग्लिश में अलग नाम होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में अलग नाम होते हैं. टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर वोकैबुलरी, आपको एक चीज के 4 नाम आने चाहिए. देन यू कैन इजीली कॉन्फिडेंटली से दैट दिस थिंग इज आल्सो कॉल्ड दिस. टू ऐड अ वैरायटी इन योर वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रैवल वोकैबुलरी. ट्रैवल में सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सी की. नाउ टैक्सी इज आल्सो कॉल्ड कैब और राइड और उबर. All these are the same names for one thing. जब आपने रेंट करनी है कोई टैक्सी, कैब, राइड, उबर, you can use all the names for the same thing. Similarly, बस को कोच भी कहा जाता है और शटल भी कहा जाता है. And if we talk about train, तो ट्रेन को हम मेट्रो हो सकती है, सबवे हो सकती है, ट्यूब ट्रेन हो सकती है. And then airplane. So airplane can be jet भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, एरोप्लेन भी कह सकते हैं. So all these are the same names, different names for the same thing. Similarly, bicycle को बाइक भी कहा जा सकता है और साइकिल भी कहा जा सकता है. Now let's talk about some buildings and structures. Starting with house. अब house को हम home भी कह सकते हैं, residence भी कह सकते हैं, dwelling भी कह सकते हैं. What's the basic difference between house and home is, house is a building. It refers to the building of your home. अब आपके घर की जो मकान है उसको कहते हैं हाउस. और होम इज अ फीलिंग. होम स्वीट होम जैसे हम कहते हैं, इट्स अ फीलिंग ऑफ होम. घर का जो फीलिंग है उसको कहते हैं होम. देन अपार्टमेंट भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, स्वीट हो सकता है, या यूनिट हो सकता है. इसके अलावा और बहुत सारे नाम से इस्तेमाल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट स्टेयर्स नाउ. सो स्टेयर्स सीढ़ियां, स्टेप्स, stairway या staircase, all these are the different names for same thing. अगर हम बात करें escalators की, escalators can also be called moving stairs. elevator भी कहा जाता है, lift भी कहा जाता है. Now we talk about common places. shop, अगर shop की बात हो रही है तो shop भी कहा जा सकता है, store, outlet, boutique, all these are different names for same thing. किसी भी चीज को इन सब नामों से बुलाया जा सकता है. इट्स द स्टोर, आउटलेट और शॉप और बुटीक. देन इफ यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट को हम कैफे भी कह सकते हैं, डाइनर भी कह सकते हैं, ईटरी भी कह सकते हैं. टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर. टॉकिंग अबाउट स्कूल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अकेडमी, academia, institute, organization. If we talk about office can also be called as workplace or bureau. If we talk about bathroom is a place that can also be called washroom, restroom, toilet, or lavatory. All these are the same name, different names for same thing. If we talk about food and dining, we'll always start with French fries. French fries is the most common example of this. अब French fries को यूके में कहा जाता है चिप्स
और फ्राइज कहा जाता है यूएस में. ऑल दीज आर द सेम थिंग्स. हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट बिस्किट्स, बिस्किट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कुकीज, क्रैकर्स and soft drinks. Achha, soft drinks are also called soda, or they are also called pop, or they are also called fizzy drinks, or they are also called carbonated drinks. If we talk about bread, अब bread के लिए हम use कर सकते हैं words loaf, a bun, a roll of bread. And then if we talk about chicken, chicken के लिए poultry भी use हो सकता है और fowl भी use हो सकता है. Moving on to clothing and accessories. Accessories के लिए और clothing के लिए आप कौन कौन से words use हो सकते हैं? For shoes, we can say footwear, sneakers, trainers, joggers, runners. सब नाम होंगे shoes के लिए. And then pants, pants को हम trousers भी कह सकते हैं और slacks भी कह सकते हैं. Talking about sweater, sweater के लिए हम jumper भी use कर सकते हैं word और pullover भी use कर सकते हैं. Talking about jacket, अब jacket के लिए हम coat alternatively use हो सकता है and blazer can also be used. Bag, अब bag की जगह हम कह सकते हैं purse, it's backpack, handbag, crossbody bag. So different types of bags, उनके according उनके different names होंगे. And last but not least, let's talk about professions. अब professions में सबसे पहले आते हैं doctors. Doctors can also be called physicians and medics. About teachers, teachers are also called instructors, educators, tutors, trainers. And then if we talk about police officer, police officers are also called cops, law enforcer. If we talk about driver, driver को हम chauffeur भी कहते हैं और motorist भी कहते हैं. If we talk about journalist, journalist को reporter भी कहते हैं और correspondent भी कहते हैं. That was all for our today's class. And tomorrow we'll be back with another exciting video with Witsol.